So right now we will discuss something regarding vectors. So let us begin. Like we people are aware, right? हम लोग को पता है कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का बात करते हैं we have two kinds. One are scalar quantities, two are vector quantities, right? So इन दोनों में अंतर क्या है? Scalar quantities have got magnitudes, whereas vector quantities have got magnitude as well as direction. Another difference to note is in case of scalars, right? You can use of algebraic rules, right? That means if you are adding two scalars, you can simply add a plus b. If you are subtracting, you can simply add or subtract a minus b. Multiplication and division are also done likewise. In case of vectors, it is done a little differently. You have law of parallelogram addition, or rather law of parallelogram vector addition. We will get to that in a bit. First, let us look at how vectors are represented. Suppose I say vector A. Can I simply write A? Just a capital A? I can write a capital A, but I will need an arrow on top of it. So, for notation, a vector is generally mentioned in bold and capital letter, and there is a vector sign on top of it, the arrow that you see. And a vector constitutes of two things, as I mentioned, magnitude and direction. So if this is a vector, the magnitude is mentioned as a mod value. So that implies what? Magnitude of a vector is positive always. जो नेगेटिव वेक्टर्स आप देखते हो, इफ यू सी माइनस ए, that means a vector of magnitude a, but say we have the direction x cap. This will represent a vector of magnitude a opposite to x cap. यानी कि अगर x cap राइट की तरफ है, माइनस एक्स कैप लेफ्ट की तरफ है. If you remember the last question that we had solved regarding a hexagon and the resolution of vectors, we will go to that point. Give it some time. Alright? Now, आप लोग को पता चल गया कि एक वेक्टर को आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट वेक्टर का
मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. हाउ डू यू रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स? एक वेक्टर आपने रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे, मान लो दिस इज वेक्टर ए, एंड दूसरा आपने रिप्रेजेंट किया, मानिए कुछ इस तरह से, वेक्टर बी. इज इट करेक्ट? Is this how you represent two vectors? Turns out there is a proper way to graphically represent two vectors. Note that this point is the initial point and this point is the final point. So whenever you are representing a vector, you can draw a line and it should be representative, right? Like it should represent the magnitude. Say if you are representing two vectors, one vector, the first one here, that is 1 meter per second, and the second one is 2 meter per second. Now roughly you can note that the vector 2 meter per second, or the velocity vector wherein the velocity is 2 meter per second, is approximately 2 times the length of the first velocity vector 1 meter per second. But if I represent this as 1 meter per second and this as 2 meter per second, this is not properly scaled. So make sure whenever you are representing two vectors or multiple vectors in the form of arrows, the vectors need to be properly scaled. If there is a 3 meter per second velocity vector, it needs to be 3 times as long as the 1 meter per second velocity vector. Now these drawings are approximate representations. Whenever you are drawing, you might need to use a measurement device, say a scale. So this is how you represent two vectors that are properly scaled. Imagine you are representing two vectors that are not parallel. How? Like the case just mentioned here. Is this the correct way to represent these two vectors? The answer is no. Then what is the correct way? ये गलत तरीका है, तो सही तरीका क्या है? Whenever you are representing two vectors that are not parallel, make sure that you draw them in such a manner that their initial points are same. एक ही पॉइंट से वो वेक्टर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं. एसेंशियली व्हाट इट मेंट इज दैट ये जो पूरा वेक्टर यहाँ पे है, व्हाट यू डिड वाज इसको पकड़ा, राइट? यू बेसिकली एक्सटेंडेड द वेक्टर. ये आगे वाले पार्ट को आपने एक्सटेंड कर दिया along the same direction as vector b, with the same length as vector b. किस तरह से एक्सटेंड किया? In such a fashion that the initial point of A and B is same, and the angle between these two vectors is theta. Initially you were given a picture of something like this. So इसमें अगर आपको कोई पूछ ले what is the angle between the two vectors, and ये angle आपका say
100 डिग्रीज दिया है, अगर आप बोल दोगे कि ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल इज 100 डिग्रीज, इट विल बी रॉन्ग। एंगल आप तब मेजर कर पाओगे जब दे हैव ए सिमिलर ओरिजिन पॉइंट। अगर आपको ऐसे दिया है, थोड़ा सा चेंज करो, दिस इज एंग वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, चेंज क्या करोगे? या फिर ए को ऐसे रखो और बी को ऐसे कर लो, और एल्स, ये तो गलत तरीका है ना, कर भी लिया ना, नहीं करना था। इनके ओरिजिन्स को मिलाना है, यानी कि जहाँ से शुरू होते हैं। सो बी को ऐसे रखिए एंड ए को ऐसे रखिए, देन ओनली यू विल गेट द एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। फ्लो में गलती कम करिए। The origin point of the two vectors being represented should be same. I hope that is understood. Now, another aspect to this is types of vectors. Types of vectors क्या है? Vectors है तो vectors के अलग अलग types भी होंगे, right? Let us see what types of vectors exist. One is unit vector. What is an unit vector? It has only direction. Magnitude होता है, but magnitude is one unit, and it represents direction. यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप लोग करते हो कुछ इस तरह से, इफ देयर इज अ वेक्टर ए, इसका यूनिट वेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज ए कैप, एंड सम पीपल प्रेफर टू कॉल इट ए हैट, ए हैट, ए कैप, आप कुछ भी कहो, द सेम थिंग। दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डिनोमिनेटर में है एंड ऊपर ए वेक्टर है। So if there is only magnitude in the numerator and denominator, magnitude can get cancelled out, आपको eventually direction ही मिलेगा। So again I repeat, unit vector के highlights होते हैं magnitude of one unit and direction, that's it. Second category is zero vector or null vector, alright, non-existent. So zero vector है, जैसे ऊपर आपका direction प्रेजेंट था यूनिट वेक्टर में, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ये दिशाहीन है, जीरो वेक्टर इज दिशाहीन। एंड वन एग्जाम्पल ऑफ जीरो वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑरिजिन। ये ऑरिजिन है, और rather this is representation of the Cartesian system in xy, and this point 0 0 is the origin. It has no direction, and
It is more of a mathematical concept. Next part is equal vectors. Equal vectors can be understood just as the name suggests. दो वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही इक्वल होगा. वेक्टर 1 or rather vector A will be equal to vector B if magnitude of A equals to magnitude of B and direction of A equals to direction of B. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, दोनों को पूरा बराबर ही चाहिए. ठीक है. जैसे कहीं पे दो ट्विन्स होते हैं ना, उनको हमेशा चाहिए होता है सिमिलर स्कोर्स, सिमिलर awards, prizes and all that stuff. Then the fourth type, that is parallel. This is very easy to figure out. Parallel vectors are two vectors in the same direction. And keep in mind वो लोग छोटे बड़े हो सकते हैं. They can have different magnitudes. So in parallel vectors, magnitude can be different, but direction is same. आप लोग को मालूम है, अगर यहाँ पे पैरेलल का बात आ ही चुका है तो there will also be something called एंटी पैरेलल वेक्टर. वहाँ पे क्या है, अगेन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव एक्स कैप डायरेक्शन में है तो दूसरा नेगेटिव एक्स कैप डायरेक्शन में है. एंड ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्रीज. पैरेलल के केस में सेम मतलब angle between them is 0 degrees. I hope that is clear. Now let us check this. There is something that we call negative vector, right? A vector A is negative vector of B if it can negate vector B. ये तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, नाम में ही लिखा है नेगेटिव वेक्टर. बट मैथमेटिकल स्पीकिंग इसका अर्थ ये है, इफ ए वेक्टर इज मान लो 2 यूनिट्स along x cap direction and b vector is same 2 units that is having similar magnitude along minus x cap direction. That means both of the vectors will cancel out each other. एक एग्जांपल देता हूँ. Assume that this is a box. ये पॉजिटिव एक्स कैप डायरेक्शन में 2 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है एंड नेगेटिव एक्स कैप के डायरेक्शन में 2 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है. So effectively both the forces balance each other out
and the net force on the body is 0. यानी कि ये जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है एंड नेगेटिव एक्स कैप डायरेक्शन में जो फोर्स है, दोनों ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया, नेगेट कर दिया। ठीक, एक फोर्स ने दूसरे फोर्स के इम्पैक्ट को पूरा ज़ीरो कर दिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉन्करेंट वेक्टर, और आप लोग इसको को इनिशियल वेक्टर भी कह सकते हो, राइट। इसका डेफिनेशन भी सिंपल है, को वर्कर्स एक ही जगह काम करते हैं, राइट। वैसे ही को इनिशियल वेक्टर्स एक ही जगह इनिशिएट करते हैं, एक ही जगह शुरुआत है, इनिशियल इज एट द सेम पॉइंट। इट्स वेरी सिंपल। देन अनदर टाइप ऑफ वेक्टर इज कोप्लेनार वेक्टर। ना कोप्लानर वेक्टर क्या है? ये एक्स वाई प्लेन है। एज्यूम दो वेक्टर्स यहाँ पे है या तीन वेक्टर्स यहाँ पे है, और वो तीनों के तीन एक ही प्लेन पे है, दे आर ऑन द सेम प्लेन, दैट मीन्स दे आर कोप्लेनार वेक्टर्स, राइट। एंड अनदर काइंड ऑफ वेक्टर इज orthogonal vectors. This is one important category. इसमें क्या है, दो वेक्टर्स होते हैं, राइट। लेट अस से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनके बीच का एंगल जो है दैट इज 90 डिग्रीज, और two vectors can be said to be orthogonal vectors when the angle between them is 90 degrees. Done. Now another part is, इसके बाद जो पार्ट है, there is multiplication and division of vectors by scalars. जब कोई भी वेक्टर को आप एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, आप किस तरह के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हो, राइट। यू नो, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो इट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ व्हाट, इससे आपने वेक्टर इनटू स्केलर या फिर वेक्टर divided by scalar. Now normally what happens, if there is a vector a and you're multiplying it by any scalar n, you will get n a vector, n times a vector. And again, if there is a vector a and you're dividing it by n, that is a scalar, it can be done as simply division किससे होता है, और रादर ये जो डिवीजन भी है इट इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे? यू कैन चेक दैट a vector by n is equals to a vector multiplied by n inverse. So जैसे कि you people already know, addition and subtraction are very similar except subtraction goes in the negative direction. Similarly, multiplication and division are also very similar. In fact, they are the same thing. बस यहाँ पे आप इन्वर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर आप इन्वर्स नहीं, वही नंबर n को ही मल्टीप्लाई कर रहे थे या वही स्केलर n को ही
मल्टीप्लाई कर रहे थे. ठीक है. So try to approach this question. There is a figure, right? Vector A, and this is vector B. This angle is 150 degrees. So what is the angle between A vector and B vector? Comment your answers down below, right? This is the very introductory session regarding vectors, and in the next session we will discover addition and subtraction of vectors. ये कैसा बात हुआ? पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख लिया, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन छोड़ दे रहे हो. ये तो गलत है. बट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर वेरी सिंपल, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स के केस में इज अ लिटिल बिट मोर इन्वॉल्विंग एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. सो आराम से वी विल cover it in the next session. Stay tuned. Thank you.